Good morning everyone, how are you all? So today in class 10th, as we have started with the new chapter, that is reflection of light. In that topic we will discuss about the laws of reflection today. Okay, in the previous video we have discussed about the introductory part of reflection, that is how it occurs, how the light travels, what are the different nature of the light, what is the speed of light, and what are all phenomena is done by the light as a particle nature and as a wave nature also, that we have already discussed. So today we are going to discuss about laws of reflection. So basically there are two laws of reflection. You must have studied in junior classes also. In class 8 you must have studied these laws of reflection. So number one law, it says that the incident ray, okay, like for example if this is a plane surface, and what will be the ray of incidence? Incidence ray will be the ray which is falling on the surface. So this ray, if this point is O and this point is A, so this OA is known as incident ray, right? So it says the incident ray, the reflected ray. Now what will be the reflected ray? So the reflection phenomena, reflection says that any ray of light which bounces back into the same medium where it was propagating, that is called a reflection. So incident ray and the reflecting ray, this is reflected ray. Let this be B, so OB is a reflected ray, and the normal to the surface at the point of incidence. Point of incidence पे जो normal आपका surface के normal का मतलब क्या हुआ? This line NO will make an angle of 90 degree with the surface. An angle of 90 degree it will form with the surface. Therefore, it is known as normal. इसी को हम क्या बोलते हैं? Normal बोलते हैं. Normal line का मतलब ये हुआ, automatically you can assume that the line will make an angle of 90 degree with the surface. So that is called a normal. So these three things, that is incident ray, reflected ray and normal to the surface at the point of incidence. कहीं और draw नहीं कर सकते. Normal आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, but it has to be on the point of incidence. That is very important. They all lie in the same plane. They all lie in the same plane. They are not going out of the plane of the surface. They are not. They are all in the plane of the surface. So that means that is the first law. That is the incident ray, normal, and the reflected ray. They all lie in the same plane. The second law, it says that the angle of incidence. Angle of incidence is the angle formed between normal and the incident ray. ये जो एंगल है ये हमेशा किस किस के बीच में बनेंगे? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इसको एज्यूम कर लेते हैं. So this is wrong. So angle of incidence is always between the normal and the incident ray. So the angle of incidence, that means this angle. This is the normal and this is incident ray. So this angle is I. And the angle of reflection, that is R. They both are always equal. Right? They both are always equal. That is the second law of incidence. So इसमें जो है generally कभी-कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है. If you say angle I equals to angle R. तो जो बच्चे गलती ज्यादातर करते हैं, like for example this you will be given 75 degree. तो आपको पूछा जाता है what is the angle of, question is asked like the angle made by incident ray with the surface is 75 degree. What is the angle of reflection? The angle made by the incident ray to the surface is 75 degree. What is the angle of reflection? So in that case, what generally mistake is done by the students, they feel like angle of incidence बोल दिया, means angle of the incident ray with the surface, they think it, they thought it of like this is an angle of incidence, but it is wrong. It is not an angle of incidence. That is the angle with the surface. So you have to find out angle of incidence first, because you know this complete angle is 90 degree.
So if this is 75, so definitely this angle will be your 15 degree. So that means angle I comes to be 15 degree. So angle R will be equals to also 15 degree. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनना है। वो बनता है हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द प्लेन सरफेस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द प्लेन सरफेस, अगर ये इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, then what will be the angle of reflection? This is very important. If a ray of light incident normally to the plane surface, what will be the angle of reflection? बच्चे लिख देते हैं 90 degree. Wrong. ठीक है, that is a wrong answer. Answer will be 0 degree. Angle of reflection will be equals to 0 degree. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही है, क्योंकि इंसिडेंट जो लाइट हुई है वो भी कैसे हुई है? नॉर्मली हुई है। तो इसका मतलब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही पोजीशन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। सो एंगल आई इज 0 डिग्री बिकॉज normal ray and incident ray both are at the same place. So angle R भी क्या होगा? 0 degree होगा. So this is very important point. वो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि if a ray of light incident normally to the surface, what will be the angle of reflection? Angle of reflection will be 0 degree. Okay. And second important point is this. You have to read the question very carefully कि वो angle जो है with the surface बोला गया है या angle जो है वो नॉर्मल के साथ बोला गया। तो अगर विद द सरफेस बोला गया होगा तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना होगा, अगर विद द नॉर्मल बोला गया होगा तो वही आपका क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज while learning about the reflection with the plane mirror. Okay, in the previous video I discussed about the different kind of mirrors, that is plane mirror and the spherical mirror. So we are going to discuss the reflection by a plane mirror. Okay, so we are going to discuss about reflection by a plane mirror. ठीक है, so before going to the reflection of the plane mirror, let us discuss about few of the terms. Few of the terms we will discuss, like real image, virtual image, let us discuss about the kind of images we have, that is the real image and the virtual image. Basically object image, you know what are object, what are images? Objects are the things which can emit the light, right? So or reflections है जो the things which is formed is known as image. Now image is of two kinds, one is virtual image, another is real image. So real image is an image which can be taken on the screen, which can be taken on the screen, ठीक है, that is called a real image, जिसको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे आपके कैमरे की इमेज होती है, that is a real image, या आप सिनेमा हॉल में मूवी वॉच करते हैं तो जो इमेज आपकी फॉर्म होती है पर्दे के ऊपर, that is also the real image. But virtual image are the images which cannot be taken, cannot be taken on screen, ठीक है, जैसे आपकी इमेज प्लेन मिरर में बनती है, ठीक। So those images are called virtual images. Those cannot be taken on the screen. We cannot script down them on the screen, so they are known as virtual images. Real images जो होती हैं आपकी वो inverted होती है,
कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो हम आपकी हमेशा इरेक्ट होती है। जैसे आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, कैमरे से जब हम फोटो खींचते हैं तो हमारा फेस तो सीधा आता है, लेकिन हमारे टी शर्ट पे अगर कोई कुछ लिखा हुआ है या हमारे बैकग्राउंड में किसी चीज में कुछ लिखा हुआ है तो वो लेटर्स जो है वो कैसे आते हैं, इन्वर्टेड आते हैं, ठीक है। ये आप कभी ऑब्जर्व करना। मोस्टली आपको सजेस्ट भी किया जाता है कि जब आप सेल्फी लें तो आप अपना इन्वर्टेड मोड ऑफ कर लें, तो पीछे वाली जो स्क्रीन होती है वो भी आपकी कैसे आएगी, सीधी आती है। सो दोज इमेजेस आर कॉल्ड रियल इमेजेस, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। जैसे आपके शीशा मिरर में आप देखते हैं तो उसमें आपकी इमेजेस कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सो दोज इमेजेस आर नोन एज योर virtual images. So they cannot be taken on the screen, or the real images can be taken on the screen. So that is the difference between real images and virtual images. And virtual images are formed by plane mirror also. So we will discuss about the characteristics of image formation by your plane mirror. Characteristics of image formation by plane mirror. ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की, तो आपको पता है कि जब भी आप मिरर में लुक एट करते हैं तो आपका जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के हमेशा बराबर होता है। दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि मान लिया आपके पास एक प्लेन मिरर है एंड ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग ओवर हियर। सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही आपका क्या होगा, इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। That is first thing. Second thing, that is the first characteristic, that the size of the object is same as the size of the image. Right? So that is the first thing, first characteristic. Second characteristic, जो distance of separation होगी between object and mirror. This is mirror, this is object, and this is image. जो आपकी सेपरेशन डिस्टेंस होगी किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। लेट्स सपोज दिस इज x, सो सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपकी किसके बीच में होगी, मिरर और इमेज के बीच में भी होगी, ठीक है। इस पे कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो आपकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी किसके बीच में, द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड द इमेज के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। सो दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। First was that the size of the object and the image is same. Third is that the image formation is always virtual and direct, हमेशा सीधी होगी, जैसा आप खड़े रहेंगे वैसे ही आपको मिरर में विजिबिलिटी होगी। That is the third, that it is forming a virtual and erect image, right? Fourth is that that is a lateral inversion property that is shown, laterally inverted। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपका लैटिट्यूड वाइज जो है वो इन्वर्ट हो गया। अगर आपका राइट हैंड आप ऊपर करेंगे तो मिरर में इट लुक्स लाइक जैसे आपने लेफ्ट हैंड को ऊपर किया हुआ है। सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड क्या होता है, उल्टा, अपसाइड डाउन। और लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। सो देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन द, जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड होता है। जिससे क्या होता है कि अगर आप शीशे में देखते हैं किसमें अपने, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते वक्त अगर आपके जो बाइक है या स्कूटी में जिस पे आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके शीशे में एम्बुलेंस लिखा हुआ आपको हमेशा सीधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कैसे लिखा हुआ है, इन्वर्टेड लिखा होता है, जिससे आप इजिली रीड आउट कर पाए और आप देख पाए कि यस पीछे जो है एक एम्बुलेंस आ रही है और मुझे क्या करना है, उसको रास्ता देना है। सो दैट इज द लेटरली इन्वर्जन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द योर प्लेन मिरर formation, that is the
first is your the size of the object and the image is same. The second is the distance of separation between mirror and object, and mirror and image is also same. The image formation is virtual and it is erect, same side of this object, and the image formed by the plane mirror is laterally inverted. So these are the characteristics of the plane mirror. Okay. Next we have the ray diagram of the plane mirror image formation. That is very important, right? So that we will discuss in the next video, that how the ray diagrams are formed by plane mirror and spherical mirrors, that we will discuss in the next video. That's all for the day. Thank you so much.